So welcome students in the new class. Today our topic is friction. It is one of the topics of laws of motion. You can find this topic in the YouTube channel by searching friction by Ab Majeed. तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन होता क्या है, कहाँ हमें इसका सामना करना पड़ता है. तो आई विल से आपने देखा होगा या हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द ग्राउंड और एनी अदर सरफेस, वी सी after some time it automatically comes into rest. तो इसका मतलब यह है कि कोई न कोई फोर्स है इसको जिसने इसकी स्पीड कम कर दी, जिसने इसको रोका और ये रेस्ट पर आ गई. तो क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास है, तो ये बताया कि कोई भी बॉडी खुद ब खुद अगर वो मोशन में है वो रेस्ट में नहीं आएगी. एंड इफ इट इज इन रेस्ट इट कैन नॉट गो इनटू द मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट. तो सेम इज द केस हियर. अगर बॉडी खुद ब खुद रुक गई, व्हाट इज द कॉज? सो दिस कॉज इज द फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन होता है जो इसको इसकी बॉडी की मोशन को स्लो करता है और एट लास्ट इसको रेस्ट पर लाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी इफ वी place a body over the surface of another body. For example, we place a block of wood over the surface of a table. जब टेबल पर इस सरफेस को रखते हैं, इस बॉडी को रखते हैं, तो हम देखते हैं इसका वेट जो है इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज नॉर्मल रिएक्शन by the table that is in the upward direction. The two forces balance each other. And this body applies force on the table and table applies force on the body. So this force is called the contact force. तो यहाँ जो force है, it is between the surface of the two bodies. It is called the contact force. तो जो contact force है, so contact force is the force which is normal to the normal reaction. It is perpendicular to the normal reaction, or we can say this the force which is perpendicular so this force, ये जो फोर्स है इट इज परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन. और इसी के सीध में जो अपोजिट फोर्स है, इफ यू वांट टू मूव, this force is the force of friction. So the force of friction is this force of friction is parallel to the two surfaces and
कंटैक्ट। तो आप देखिए कि जो ये फोर्स है ये इन सरफेस के दरमियान है, दिस विच कॉल्ड और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब देखिए जो ये बॉडी है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब अप्लाई हो जाता है when the body is this force of friction or because of friction it gets applied. Number one, when there is relative motion. Number two, अगर relative motion नहीं है but the body is has a tendency to move. That means tendency. Of relative motion. Number three, ये जो force of tangentially होता है to surface and contact. It is tangential to the surfaces and contact. तो जब ये रिलेटिव मोशन होगा, जब टेंडेंसी मोशन होगा और जब ये टेंजेंशियल होता है फोर्स। तो दूसरी बात ये है कि रिलेटिव मोशन बॉडी में कब होती है? रिलेटिव मोशन तब बॉडी में होता है व्हेन वी अप्लाई फ्रॉम फोर्स टू मूव द बॉडी। इसी तरीके से टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन ये भी तब ही होती है जब अप्लाई फोर्स करते हैं अप्लाई बॉडी को मूव करने के लिए। एंड दिस टेंजेंशियल दैट मींस इट एक्ट्स टेंजेंशियली दैट मींस अलोंग द सरफेस ऑफ द कंटेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब ही अप्लाई हो जाता है जब वहां रिलेटिव मोशन होगा या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होती है। तो ये रिलेटिव मोशन तो रिलेटिव मोशन तब होती है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। इसका मतलब यह है कि दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओनली एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी टू so that the body is able to move. So when we apply certain force on the body to move the body, to make the body move along the surface of over the surface, at that time this force of friction comes into the play. So we can say that force of friction is the opposite, always in the opposite direction. Opposite direction होता है। We can say the force of friction, or we can say force of फ्रिक्शन। हम इसके डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, the opposing force which comes into play, the opposing force which comes into play when two bodies are in relative motion with each other or have the tendency of relative motion। यानी या तो इनमें टेंडेंसी होगी रिलेटिव मोशन की या रिलेटिव मोशन होगी, तो उस वक्त हमारा जो फोर्स होता है दिस इज अपोजिट फोर्स उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
तो इसका मतलब है ये हमारी जो मोशन होती है, जो किसी बॉडी की मोशन, उसको अपोजिशन करता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है और उसको रेस्ट बनाने की कोशिश करता है। तो अब व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी इस फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है, व्हाई दिस फ्रिक्शन गेट्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो हम देखते हैं अगर कोई भी बॉडी होगी, दिस इज द बॉडी, वी see this body, we observe this body, but we observe that its surface is smooth, but actually this is not the case. असल में क्या बॉडी होती है, जो बॉडी की सरफेस होती है ये थोड़ा खुरदरी होती है, इसमें अपर्स एंड डाउन होते हैं, वो जो हमें नेकेड ऐसे नजर नहीं आते। इफ यू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप वी कैन सी दिस बॉडी इज जस्ट लाइक दिस। इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं। जब इसके ऊपर दूसरी बॉडी को हम रखते हैं तो उसमें भी ऐसे ही तरह अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम एक बॉडी, इस बॉडी ए को दूसरी बॉडी पर रखते हैं, these humps or we can say the depressions, they get into contact with each other, they press each other. जब ये प्रेस एक दूसरे को करते हैं, देयर इज ए सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्डिंग, यानी इनमें से एक फोर्स पैदा होता है, हाँ, तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग, यानी इनमें से जुड़ जाती है, थोड़ा बहुत कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है। और जब भी हम इस बॉडी को मूव करना चाहेंगे तो जो फोर्स हम लगाते हैं उस फोर्स को क्या करना पड़ता है, इट हैव टू break these cold weldings, these depressions, these humps. So we can say a body surface is not so smooth as it seems, जैसे हमें लगता है ऐसे स्मूथ है ही नहीं, बट हैज अपर्स एंड डाउन्स, अपर्स एंड डाउन्स होते हैं। सो व्हेन वन बॉडी इज प्रेस अनदर बॉडी, बॉडी एक दूसरे पर होते हैं तो क्या होता है, दीज गेट कोल्ड वेल्डेड, कोल्ड वेल्डेड हो जाते हैं। और हमें व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू मूव द बॉडी वी हैव टू ब्रेक दिस कोल्ड वेल्डेड, वी हैव टू ब्रेक दिस फोर्स। इस तरीके से हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, there are various types of friction, types. नंबर 1 एक को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब बॉडी मोशन नहीं करते होगी, मूवमेंट नहीं करते होगी, बट इट इज इन रेस्ट पोजीशन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। हम फोर्स अप्लाई करते हैं, we apply the force, but the body is sitting in rest. यानी अभी फॉर एग्जाम्पल इस अलमारी को हम धक्का देते हैं, यानी हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं, बट दिस अलमारी doesn't move from this place. So when it doesn't move from this place, that means we are applying the force, we try to move this body, but it doesn't move. So at this place, this force of friction will be called as static force of friction. So it gets applied only when the body has tendency to move. So the opposing force which comes into play
when the body has tendency to move but have no actual movement. Actual movement इसमें नहीं होगी, but it has a tendency to move after applying the force. इसको हम बोलते हैं static friction. इसके बाद है दूसरा, इसको बोलते हैं limiting friction. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? ये भी एक किस्म का स्टैटिक फ्रिक्शन ही है. ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन. यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन. दैट मीन्स एट दिस स्टेज द बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव. उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसको हम बोलते हैं द फोर्स ऑफ द मैक्सिमम opposing force which comes into play when the body just begins to move over the surface of another body. यानी दूसरी बॉडी पर ये मूवमेंट शुरू करने जा रही है, यानी जस्ट बिगिंस टू मूव. इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन.